कई बार you just need a break from Instagram or maybe you created an Instagram account by mistake और आप जानना चाहते हैं कि Instagram account permanently delete कैसे करते हैं. So this video is for you. I am your host हर्षित अरोड़ा. चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, सीधा शुरू करते हैं. So I'm going to tell you step by step process. ध्यान से समझिएगा. Just go to your Instagram app and tap on your profile. Then tap on 3 lines and here you will see many options. अब से पहले तक आपको डीएक्टिवेट और डिलीट करने का ऑप्शन यही मिल जाता था, बट नाउ इट्स अ बिट कॉम्प्लिकेटेड. जस्ट गो एंड टैप ऑन द अकाउंट सेंटर, देन स्क्रॉल अ बिट, यू विल सी पर्सनल डिटेल्स. टैप हियर and here you will see option called account ownership and control. Go tap on this and here you will see deactivation and deletion. If you choose deactivate, then your Instagram profile will be temporarily deactivated. मतलब आपकी प्रोफाइल हिडन हो जाएगी, कोई फोटो वीडियो डिलीट नहीं होगा. This is a good option if you want a temporary break from Instagram. But if you choose to delete the account, then आपके सभी फोटोज, वीडियोस, कमेंट्स and all सब डिलीट हो जाएगा. So here we choose to deactivate the account and tap on continue. And here you can see कि आप किन किन चीजों का एक्सेस लूज कर देंगे, like आपके फॉलोअर्स, इमेजेस, वीडियोस and all. After this, you will see an interface like this and here you can choose the reason why you want to deactivate the account. We choose something else here. After this, tap on continue and here you will see final window, जहां आपसे confirmation लिया जाएगा कि if you want this or you want to cancel this. If you tap on deactivate account, तो आपका account deactivate हो जाएगा. लेकिन what are the steps if you want to delete the account permanently? उसके लिए we follow the same steps until we see this interface. Now here, choose delete account and tap on continue. Choose the reason, then tap on continue again. अब it will give you these options. Here you can choose to export your information. जैसे अगर आप चाहते हैं कि आपकी फोटोज, वीडियोस, कंटेंट आप एक्सपोर्ट कर सकें तो आप कर सकते हैं. एंड इट शो यू ऑप्शन टू डीएक्टिवेट द अकाउंट. यानी अभी भी इंस्टाग्राम आपको इंकरेज करना चाहता है कि आप अगर चाहें तो एक बार और सोच लीजिए कि आपको अकाउंट डीएक्टिवेट करना ज्यादा सही ऑप्शन लगता है या आप डिलीट ही करना चाहते हैं. But if you are sure you want to delete the account, then tap on continue. Now here you have to enter the password for verification. Then you will see the final interface where you get the option to permanently delete your account. Tap here and आपका अकाउंट permanently delete हो जाएगा. As per Meta, इस प्रोसेस को कंप्लीट करने के बाद आपका अकाउंट इमीडिएट इफेक्ट से इंस्टा पर नहीं दिखेगा, बट अकाउंट डिटेल्स पूरी तरह डिलीट होने में कुछ दिन लगेंगे. एंड इसकी इंफॉर्मेशन आपको यही मिल जाएगी जैसे यहाँ 7FAP शो हो रहा है. After deleting the account, if you feel like you want it back, you can recover it before the deletion process completes by going to the account center or simply by logging into your account again. So this is how you can deactivate or permanently delete your Instagram account. Hope you understood the process. If you want to know the same information for any other app, do let us know in the comments and subscribe to Gadgets 360 for more such useful and easy to understand tech tips.